Hello friends, I am Vinod Kenny. Welcome all of you on behalf of my YouTube channel Magica Electronic. You can follow me on YouTube with my 3 YouTube handle, at Vinod Kenny 1, at Vinod Kenny 2 and at Vinod Kenny 3. Today's video is about Android TV board number TP.RT2982.PB801 in dead condition. Indicator light is red, remains red after powering by remote as well as power key. I am using tweezer to short power key to ground, but no effect. TV remains in standby. In this situation I will first check standby voltage 5 volt. 5 volt looks like to be okay. Next I will check 3.3 volts. Hey, we got the faulty line. Instead of 3.3 volt this regulator is giving 1.1 volts. Now I will test another 3.3 volt regulator. Here 3.3 volt is okay. Now I need to replace this 3.3 volt regulator. Before replacing this regulator, I will first check for any shorting in 3.3 volts line in diode test mode. It looks like there is no direct shorting in this line. For rectifying this fault I will remove this regulator first. I will now use 0 to 30 volt power supply to check further loading in 3.3 volt line. I have now connected positive voltage from power supply here. And connect power supply negative to circuit ground. Power supply is adjusted to give an output of 3.3 volt at 7 ampere current. I will now press output button of the power supply. The power supply is drawing the current of 1.8 amp. This is high loading condition. Now I will check for any component which is heating or not. Microprocessor seems to be okay. eMMC IC also seems to be okay. Now I will check for any heating component with the help of fluke temperature tester. Hey, we have now caught the culprit component. It is a Wi-Fi driver IC, drawing the temperature of 64 degree, too hot. Wi-Fi driver IC was drawing the current of 1.6 amp. See how easy it is to find the faulty component when you are working with theory. Now I am going to remove this IC. After removing IC, clean the area with Taralac company thinner. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो करंट है अब ड्रॉप हो गया है 0.005 एम्पियर पे। पावर ऑन की दबा के ऑन करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमने ग्राउंड और पावर की को दबाया और यहाँ पर आपको देखना है कि ये रेड एलईडी अब ग्रीन में ट्रांसफ़र होनी चाहिए। ये टीवी अब स्टैंड बाई से निकल चुका है और इसमें जो प्रॉब्लम थी स्टैंड बाई पे अटकने की है हमने सॉल्व कर दी। और अब हम देख लेते हैं इसमें ये करंट कितना कंज्यूम कर रहा है। तो ये करंट जो कंज्यूम कर रहा है वो 142 मिली एम्पियर का ऑन होने के बाद। सो ये ठीक है इसमें ये करंट। और अब हम इसके रेगुलेटर को रिप्लेस करके देखेंगे। ये टीवी अब ऑन हो चुका है। इसमें जो प्रॉब्लम थी वाईफाई ड्राइवर आईसी की वो हमने निकाल के इसे ठीक कर दिया। इसमें शॉर्टिंग थी 3.3 वोल्ट की लाइन की। जो सप्लाई में प्रॉब्लम थी वो सही है। यहाँ पे 3.3 वोल्ट ओके है, 1.2 वोल्ट ओके है, 5 वोल्ट ठीक है, ये भी 5 वोल्ट। eMMC में जाने वाले सप्लाई यहाँ पे 3.3 वोल्ट।
यहाँ पे 1.5 वोल्ट ओके है, जो रैम सप्लाई के लिए होते हैं। 1.5 वोल्ट यहाँ से बन रहे हैं, ठीक है। EMMC यहाँ 3.3 वोल्ट की है, VCC की और VCC दोनों 3.3 वोल्ट की है इधर। ओके, तो सभी सप्लाई ओके है। पैनल में जाने वाली सप्लाई भी यहाँ पर ओके है। अब हम पिक्चर देख लेते हैं।